Hello everyone and welcome to my live stream. So first of all, sorry for not being able to come live for the past few days. So I was down and out with fever. Still you can make it out from my voice. I have not fully recovered, but I have decided to continue the series. Okay, so let's begin. Okay. So our question says, show that p minus 1 is a factor of p to the power 10 minus 1 and also of p to the power 11 minus 1. So we have to show that p minus 1 is a factor of both the expressions. Okay. Now let me show something on the rough part. Now suppose say 5 is a factor of say 30. 5 is a factor of 30. So if we divide 30 by 5, so our remainder is 0. Okay, remainder is 0. So what I'm trying to say is, if we divide a number by its factor, the remainder always is 0. Okay. In fact, the definition of remainder says a number which exactly divides a number is called its factor. Okay. Same is the case with polynomials. If one polynomial is a factor of other polynomial, then on dividing, the remainder must be 0. Now we don't have to actually divide it. We have something which we call remainder theorem, is it? So using the remainder theorem, we can find out the remainder without actually dividing. Okay. So given, or we can say, we can take let fx. So fx equals to p to the power 10 minus 1, and say gx is equal to, that means we have assigned names, we can say, no? This is polynomial f with, so this is fpn, not okay, this is fpn gp. So this is the polynomial with variable p, and this is also another polynomial g with variable p. Now we have to check if p minus 1 is a factor. So what we can do, so if again I have to show something on the rough part. If p minus 1 equals to 0, that means if we are finding the 0 of the polynomial p minus 1, so p minus 1 equals to 0, which gives p is equal to minus 1. So what we can do, we can check f1, that means
we have to replace all the values of p with 1. So in this part we have only one value, एक ही value है इसका. So 1 raised to the power 10 minus 1. So 1 raised to the power, any power is 1. So this is 1 minus 1 equals to 0. That means if we divide p to the power 10 minus 1 by p minus 1, we will get the remainder 0. So let's check with the second polynomial. दूसरे में भी देख लेते हैं gp. So this is 1 raised to the power 11 minus 1. So this is also 1 minus 1, which is equal to 0. So therefore we can confirm that p minus 1 is a factor of both polynomials. Polynomials. ठीक है. सोनल जी, सोनल पूछिए. सीताराम पवार से हाय. हेलो सीताराम जी, और आप दोनों का स्वागत है स्ट्रीम में. बहुत बहुत स्वागत. एक बार स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. एंटोनियो सेज हेलो. Sonal, take example of 5 degree and more and explain how to find the roots. Antonio says, how are you? I am fine, Antonio. How are you? And welcome to my stream. सोनल जी, मैं एक्चुअली पिछले कई दिनों से ये स्ट्रीम कर रहा हूँ, बस लास्ट 3 दिन को छोड़ के. तो आप मेरा जो लास्ट वाला स्ट्रीम है तो उसको एक बार चेक कीजिए. तो उसमें मैंने जो आपका क्वेश्चन है ना, डिग्री 5 ऐसे बड़े बड़े जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन किया हुआ है. तो आप ये वीडियो मेरे आप चैनल पे जाइए, और जो एक होता है शॉर्ट्स का सेक्शन, एक वीडियोस का और एक लाइव का पार्ट होता है ना, तो उसमें वो वीडियो अपलोडेड है. तो आप उसको एक बार चेक कीजिए. तो उसमें वैसे क्वेश्चंस किए हुए हैं. ठीक है, तो आप एक बार चेक कीजिए. अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा मुझे. और क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत थैंक यू. Okay, let's try one more. For what value of m for what value of m is x cube minus 2mx square plus 16 divisible by x plus 2. Let me adjust this one. Okay, so the question says for what value of m is x cube minus 2mx square plus 16 divisible by x plus 2. So on reading the question we can easily make it out that x plus 2 is a factor of this polynomial. यहाँ पे बता दिया गया है कि x cube minus 2mx square plus 16 is divisible by x plus 2. And the only thing we are required to find is the value of m. M is an unknown value here. Just a minute.
एक्चुअली मेरी सर्दी खांसी से अभी भी मैं पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, सो आई माइट हैव टू टेक a few breaks in between, so don't mind for that. So for what value okay, so let us let px be equal to x cube minus 2mx square plus 60. Okay, and given x plus 2 is let me rewrite this. What is divisible by, given px is divisible by x plus 2. So that means we can say that p minus 2 is equal to 0. Okay, because if this is divisible, that means x plus 2 is a factor of the polynomial, and if x plus 2 is a factor, that means on dividing we will get the remainder 0. So p minus 2 is equal to 0. How we got minus 2? Same way. Let me show you. So here x plus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 2. So we can take p minus 2. So now actually in control system, to find the stability we need to control step. That's why सोनल, अगर आप कोई क्वेश्चन भेज सकती है तो आई कैन ट्राई, अदरवाइज आज एक्चुअली क्या होता है ना, मैं स्ट्रीम से पहले आई सिलेक्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई गो टू द स्ट्रीम. सो अगर आपके पास है कुछ क्वेश्चन आप भेज के देखिए एक बार. आई विल ट्राई. एंड फैंस @fans says hi, hello and welcome. Okay, so p minus 2 is, we will replace all the x with minus 2, so this becomes minus 2 cube minus 2m. We have x square, so this will be minus 2 whole square, and plus 16 equals to 0. Okay, so I am taking a new page to solve. Let me adjust my notebook. Anurag Gupta says hi. Hello Anurag ji, welcome to my stream. अरे आपका लोगो तो बहुत खतरनाक लगाया हुआ है आपने अनुराग जी. Okay, just a minute, I will look at the values here. Okay, so I had minus 2x cube, no? Minus 2 whole cube, so this is minus 8, because cube of any negative number is negative, is it? Aryan @123 says hi. Hi Aryan, welcome to my stream. Okay, then I had just a minute, I have to keep turning to the previous page. So this is minus 2m and minus 2 whole square. So minus 2 whole square is 4, and 4 into minus 2 is minus 8. So we have minus 8m and plus 16. Okay, so I will write minus 8m and plus 16. Minus 8m plus 16 equals to 0. Okay, so we have minus 8 and plus 16. So 16 minus 8 is 8. So minus 8m and plus 8. So इस 8 को ट्रांसपोज कर लेंगे, minus 8m, and this becomes minus 8. So for m, this will be minus 8 divided by minus 8.
So our answer is 1. Okay. Okay. So let's try one more. Okay. So let's try one similar question. If x plus 2a is a factor of x to the power 5 minus 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3, find the value of a. So the question is similar to the previous one. Only thing is the polynomial is a polynomial with degree 5. No? So if x plus 2a is a factor of x to the power 5 minus 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3, then find the value of a. So just like the previous question, we are told that x plus 2a is a factor of this particular polynomial. Okay, that means if we divide this polynomial by x plus 2a, our remainder will be 0. Okay. Okay, just a minute. So Sonal, the number of roots s सोनल ये s मतलब कि s रेज टू द पावर 7 है ना? यहाँ पे शायद आपने s7 s6 ऐसे लिखा है. एम आई राइट? s टू द पावर 7. एक बार आप बताइए चैट पे, देन आई कैन हेल्प यू.
Okay, so x plus 2a is a factor of px. That means this will be p minus 2a. Okay, how? Let me show you once again. So if we are finding the 0 for this polynomial, so x plus 2a is equal to 0 and x is equal to minus 2a. Okay, so we will replace all the values of x with minus 2a. So minus 2a raised to the power 5. Yes sir, s to the power. ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ये नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है ना, तो डिग्री 7 है इस पॉलिनोमियल का ना, एस रेज टू द पावर 7, तो नंबर ऑफ रूट्स 7 ही होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 रूट होते हैं ना, तो एक एफ एस इज रेज टू द पावर 7, तो उसके 7 रूट्स होंगे। वही आंसर है। ठीक है, okay, so minus 2a raised to the power 5. So the base is negative and the exponent is an odd number. Okay, so our value will come in negative. इसका value negative में आएगा, negative हो रही है value तो ठीक है, कारण base to हो गल negative আৰু exponent আছে odd numberত। যদি base negative হয় আৰু exponent odd numberত আহে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো নেগেটিভতে আহিব। so 2 raised to the power minus 5 is minus 32. okay, so this is equal to 0. ठीक है।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तब से म्यूट था क्या वीडियो? एक्चुअली सर्दी खांसी है ना, तो एक बार खांसने के लिए शायद म्यूट किया होगा, उसके बाद अनम्यूट करना भूल गया। थैंक यू मैसेज में देने के लिए। शौर्य शौर्य एक्चुअली आज पॉलिनोमियल्स में लगे हुए हैं हम लोग क्लास 9 पे। आप चैट्स में देख सकते हैं, सोनल ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, बट मैं उसका आंसर देने जाऊंगा तो ये रह जाएगा, ठीक है ना। तो लेट मी सी मैं क्या कर सकता हूँ आपके आंसर्स का, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट let's take the next factorization. So these are easy factorizations. Splitting of middle term, is it 84 minus 2r minus 2r square. Okay, so if you want you can rearrange the terms, minus 2r square. বহুতে এৰেঞ্জ নকৰাকৈও কৰি দিয়ে, তেনেকৈও কৰিব পৰা যায়। এৰেঞ্জ কৰি ল'লে বেছি ভাল হয় আৰু কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। So we have minus 2r square, minus 2r and 84. So what we can do, we can take out a common factor out of these three terms. So we can take out minus 2. Okay. So we will have r square plus r, and 84 divided by 2 is how much? 40. So we'll have minus 42. Okay. So let's see. So the middle term, now for few steps we have to ignore this minus 2. We will consider this as the polynomial. So we have r square plus r and minus 42. So we have to split the r in such a way. We have to split the middle term, what I meant, in such a way that on adding we must get 1. Why 1? Because r does not have a coefficient, so we will assume कि इसका coefficient 1 है. So we have to find two factors, okay, such that the sum is plus 1 and the product is minus 42. So जिनको जिनको नहीं आता है प्लीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ओके। सो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा, তেতিয়া ফেক্টৰছবোৰ উলিয়াবলৈ ইজি হয়। এনেতো ওলাই আছে ধুনীয়াকৈ আনচাৰটো, बट यहाँ पे व्हाट आई वाज सेइंग कि आंसर तो ऐसे दिख रहा है एकदम, लेकिन जिनको जिनको नहीं आता है, लेट मी शो यू हाउ टू डू, या फिर जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए ये स्टेप है। सो we have to do a prime factorization of 42 and we can find out all the prime factors. Now you find out all the possible combinations of getting 42. So for example 2 into 21 is 42, 6 into 7 is 42, 3 into 14 is 42, and the most obvious 1 into 42 is 42. So out of these four combinations we have to pick one. Pick one in the sense we have to arrange them in such a way that on adding the factors we must get plus 1, and on sorry, on multiplying we must get minus 42. Now if the middle term is in positive and the constant number is in negative, that means कि एक नंबर तो नेगेटिव होना है इसके लिए, ठीक है। কথাটো বুজি পাইছানে? এটা নম্বৰ মিডল টাৰ্মটো যদি পজিটিভত আছে and if the constant term is in negative, that means out of the two factors one factor has to be in negative. Okay, now कौन सा वाला term negative लेना है? Now that depends on the middle term here. The middle term is positive, that means the bigger value has to be the positive one and the smaller value will be negative. तो इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे, so this will be r square plus 7r minus 6r minus 40 minus 2. माइनस 2 तो केनेके लिखी जाम अभी लिखी गई थी, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे लास्ट तक. सो आउट ऑफ दीज टू टर्म्स वी कैन टेक आर.
r as a common factor. So r plus 7 will remain inside the bracket. Okay, and out of these two terms, we can take minus 6 as the common factor, and we will have r plus 7. So our answer is minus 2 r plus 7 into r plus 7 into r minus 6. Factorize x cube plus x square minus 4x and minus 4. So as we can see, this is the cubic polynomial with 4 terms. This is a cubic quadrinomial. Okay, so solution, let px be x cube plus x square minus 4x and minus 4. So if you have gone through my previous live streams where we have solved this kind of question, I have explained how to proceed. Okay, so still मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है. So we have to check for the constant term here and the coefficient of x cube. Coefficient of x cube is 1. There is nothing, so we will assume the coefficient to be 1, and this is minus 4. So basically we are looking at factors of 4, factors of minus 4 to be very much specific. So factors of 4. So factors of 4, factors of 4. So usually we write 1, 2 and 4, is it? But we will now take them as plus minus 1, plus minus 2 and plus minus 4. Very simple reason. If 1 into 4 is 4, so is minus 1 into minus 4. So we have to assume all the values, positive and negative. So if you want, you may write, or you can just pick one value from here and proceed. So we will start with plus 1. So we will assume P1 and check. So x cube. So this is 1 cube. তাৰপিছত এইটো x square আছে, x square মানে হৈ গ'ল 1 whole square, then minus 4 into 1 and minus 4. Okay, so 1 cube is 1, 1 square is also 1, 4 into minus 4 into 1 is minus 4 and minus 4. So this is minus 8 and plus 2, so minus 6. So this is not going to help, is it? So next is minus 1. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग चेक करके देखेंगे minus 1. So minus 1 का होल क्यूब प्लस minus 1 का होल स्क्वायर, सॉरी minus 4 into minus 1 or minus 4. So cube of any negative number is always negative, is it? So this is minus 1. Square of any negative is positive, so this will be positive 1. So 4 into minus 1 is minus 4, and minus 4 into minus is plus 4, and this is minus 4. So minus 1 plus 1 plus 4 and minus 4 will get cancelled, and we have 0. Okay? So if p minus 1, p minus 1 is 0, so our value is x plus 1. Okay, x plus 1 will be a factor. Why? Let me repeat. If x plus 1 is equal to 0, then
I mean, if we are finding the 0 of this polynomial x plus 1, then x plus 1 is equal to 0, then x will be equal to minus 1. So I am just saying the ulta. So if on taking the value minus 1, our polynomial becomes 0, then x plus 1 must be the factor. है Okay? So I am just continuing in the next page. So I will write that x plus 1 is a factor of this particular polynomial. আজি মই বেছি জোৰত ক'ব পৰা নাই কাৰণ চৰ্দি কাহ হৈ আছে আৰু আৱাজটো বেছিকৈ ওলোৱা নাই তাৰমানে ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে বেয়া চেয়া যেন নাপায় মানুহবোৰে तो अभी मैं कह रहा था कि मेरी आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं आ रही होगी बिकॉज मैं अभी भी रिकवर नहीं हुआ हूँ तो तबीयत अभी भी ठीक नहीं है सर्दी खांसी बुखार तीनों है सो अगर मेरा मतलब वॉल्यूम कम आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं x plus 1 is a factor of x cube plus x square minus 4x minus 4. X plus 1 is a factor. X plus 1 यहाँ पे मिला था ना x plus 1 is a factor. Okay, so x plus 1 is a factor. तो सिंस दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स तो ज़रूर आएंगे 3 फैक्टर्स तो ज़रूर आएंगे है ना सो वी हैव गॉट 1 फैक्टर सो बाकी 2 फैक्टर्स के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस ओके ইয়াক আমি এইটোৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো ডিভাইড কৰাৰ উপায় নাই যোনটো লং প্ৰচেছ সেইটো দিয়ে ডিভাইড কৰিব লাগিব এক্স স্কুৱেৰ এক মিনিট দেই এইটো -4 হয় নট -4x so x plus 1 ठीक है so x cube यहाँ पे है x cube and this is x so we have to multiply x plus 1 by x square okay on multiplying x plus 1 by x square what do we get x square into x is x cube x square plus 1 is x square ठीक है सर दुटा माइनस हो जाएगा बढ़िया माइनस वाला साइन चेंज हो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सो we'll assume that the sign of the term is getting changed so plus x cube and minus x cube gets cancelled plus x square and minus x square gets cancelled so the next two terms are minus 4x and minus 4 so we have to multiply minus 4 है ना so we have to multiply minus 4 to this term x plus 1 to get these values minus 4 into x is minus 4x and minus 4 into 1 is minus 4 sign change and minus 4x plus 4x gets cancelled minus 4 and plus 4 gets cancelled 0 so therefore we can write x cube plus x square minus 4x minus 4 is equal to x plus 1 okay we can write x plus x cube plus x square minus 4x minus 4 is equal to x plus 1 and x square minus 4 this is nothing but this is the division algorithm for polynomials ठीक है dividend is equal to divisor into quotient plus remainder but we don't like plus 0 तो यही तक छोड़ेंगे now x plus 1 usually we get a trinomial here जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना but here we have got x square minus 4 so this can be written as
x plus 2 and x minus 2 using the identity, or let me write the identity here. A square minus b square equals to a plus b into a minus b, is it? So by using the identity we can find the three factors. ठीक है, अखिल, प्रियंका, दोनों को हेलो, दोनों को वेलकम। चलिए, अच्छा है, यूपी और एमपी में बातचीत हो रही है। तो अखिल और प्रियंका, आप चैनल में अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज 3 दिन के बाद, गैप के बाद लाइव आया हूँ। एक्चुअली मैं रोज़ ही लाइव आता हूँ, बट लास्ट 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आई वॉज नॉट वेल, सर्दी खांसी बुखार। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो रहा है लास्ट फ्यू डेज में, सो आई एम ऑल्सो नो एक्सेप्शन। मेरी वॉइस सुन के लग ही रहा होगा। इनफैक्ट आज कम से कम 15-20 मिनट के लिए शायद मैंने म्यूट में रख के ही लाइव बहुत देर चला दिया। मुझे पता ही नहीं था कि म्यूट था। मतलब इतनी खांसी आई तो मैंने म्यूट करके खांसना शुरू किया और देन आई फॉरगॉट उसको अनम्यूट करना। तो जब चैट में देखा कि कह रहे हैं कि म्यूट है तब जाके पता चला। सर a प्लस बी होल स्क्वायर थ्योरम प्रूव करके दिखाओ। हाँ जी, कोई ये तो ओम अजमेरा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या? मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर आप करते हैं ना, 5 स्क्वायर मतलब कि 5 इंटू 5 ऐसा होता है ना। तो अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा इसका, सही है। तभी एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है इनको। सो a को a प्लस बी से करेंगे और फिर ये प्लस बी है तो प्लस बी लेके a प्लस बी, ठीक है। तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, a इंटू बी हो जाएगा ए बी, b इंटू ए बी ही होता है, और b मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर। सो ए बी और ए बी मतलब कि 2 ए बी आ गए तो ए स्क्वायर, 2 ए बी तो दिस इज 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओम जी, शायद अभी समझ में आ गया होगा आपको। रूपी परवीन, मैं तो 7 में हूँ। कोई बात नहीं रूबी, हम लोग यहाँ पे 7 क्लास 8 सब कुछ कवर करते हैं अप टू क्लास 10। फ़िलहाल मैं 10 तक ही कवर कर रहा हूँ। अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ें फ्यूचर में, 10 लाइक करोगे तो भाई एक ही लाइक मिलेगा आप लाइक को 2 बार टच करोगे तो वो अनलाइक हो जाता है ना। तो हम एक ही बार कीजिए, आप 10 लोगों को भेज सकते हैं, है ना। आदर्श चौहान, हेलो हेलो आदर्श चौहान, कैसे हैं आप? सबको मैं वेलकम करता हूँ मेरे स्ट्रीम में। आप लोग नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे स्ट्रीम को एंड ही करने वाला था अभी, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं है ज़रा। मैं वैसे तो पढ़ाता हूँ ओम जी, बट अभी ये चैनल मैंने सिर्फ अभी आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स भी एकदम कम है अभी तक। बस यही सोच के किया है कि मैं स्कूल में भी अप टू 10 ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ भी मैंने वही सोच के स्टार्ट किया था कि क्लास 10 तक ही कवर करना है। बट पिछले कुछ स्ट्रीम से, इनफैक्ट आज भी किसी ने पूछा था क्लास 11-12 के क्वेश्चंस पूछे थे, तो शायद मैं स्टार्ट करूँ 11-12 के, लेट्स सी। अखिल पांडे, हाँ मैं 11 से। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एकदम दिलों की बौछार हो रही है। थैंक यू, जो भी भेज रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू। हेलो आदर्श, बहुत बहुत स्वागत आपका। अखिल, आप स्पेसिफाई कर दीजिए किसका इंस्टा आईडी चाहिए, नहीं तो सब लोग भेजना शुरू कर देंगे आपको। ओम जी, मैं असम का रहने वाला हूँ ओम जी। असम में डिब्रूगढ़ करके एक शहर है, छोटा सा शहर, मैं वहीं से हूँ। मेरी वॉइस कम आ रही होगी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आदर्श, वो रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे अभी उसका। अखिल भाई, ये अभी रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ रेलेवेंट आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तनिष, जेई एडवांस का TY की करा दो। मैं फ़िलहाल तो जेई एडवांस नहीं करा रहा हूँ तनिष जी, तो मैं आपकी फ़िलहाल तो कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। फिर भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। ठीक है, सो जी नहीं तनिष, ये जब वीडियो शायद अभी थंबनेल में ये दिख पा रहा है कि पता नहीं। फ़िलहाल हम लोग ये क्वेश्चंस क्लास 9 की जो NCERT एग्जाम्पलर बुक है उसमें से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बुक की कवर अगर आप चाहें तो। ये है NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, तो इसमें से मैं फ़िलहाल करा रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं RD शर्मा से भी कराता हूँ क्वेश्चंस, RS अग्रवाल, सारे जो इम्पोर्टेंट बुक रहते हैं ना वहाँ से मैं कराता हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। लेट्स सी, अगर कल मैं लाइव आता हूँ तो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। চাওঁচোন কি কৰিব পৰা যায়, এইকেইটাতো যিহকে বলকি আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ষ্ট্ৰীমত অহাৰ বাবে। আজি গা বেয়া আছিল যদিও বৰ বেছিকৈ কৰাব নোৱাৰিলোঁ। চাওঁ কাইলৈ কি কৰাব পাৰোঁ। কাইলৈ হয়তো কোঅৰ্ডিনেট জমেট্ৰি বা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন কিবা এটা ধৰিম আৰু চেপ্টাৰ এটা। ঠিক আছে, and thank you once again to all my viewers for joining. Good night and take care.